Assalamu alaikum. Good evening, viewers. Welcome to ZLKKAS Favorite. Hope you are enjoying the weekend. So, up till now, we have done three elements of accounting: assets, liabilities, and expenses. Still, we have two more: revenues and capital. So, in today's video, I will try to explain these two to just finish this topic, right? So without wasting more time, just over to Sam. Yes, so the next element of accounting is revenue. So far, we have done assets, liabilities, and expenses. I will also make a summary video for all of the elements just for quick review. Right now, over to revenue. The total amount of money brought in by the company's operations over a set period of time. This is basically an income generated by sales of goods and services. So just try to understand the word revenue. That basically means the income that the company will get from the sales of its products, right? It is basically the income, the money that the company earned. Of course, if the business of the company is to sell any product or service, then how the company will get the income, how the company will generate the money? Of course, by selling. So, through selling the products and different services, for example, if the company had a business of selling furniture or stationery, then how they can generate the money? Of course, by selling their product, by manufacturing them and then getting orders, delivering, and selling the products. So, after selling these items, they can generate the money, means they will get their income. So, that income which is generated by selling the goods or services is basically the revenue, right? So I think it's very easy. Revenue is simple. Revenue आपकी इनकम होती है, वो पैसा होता है जो आप अपने बिजनेस से कमाते हैं. जो भी आपके बिजनेस का प्रोडक्ट है, जो आप सेल करते हैं या जो आप सर्विसेज देते हैं, वो देने से जो आप पैसा कमाते हैं वो आपकी कमाई होती है, वो आपका इनकम होता है, एंड दैट इज एक्चुअली द रेवेन्यू. Revenue calculation. Here is certain for the calculation of revenue, we have a formula to count the revenue through the period of the time. For example, about 1 week or 1 month, the company has to calculate how much revenue they have earned so far. So, what they will do, they will use this formula to calculate their revenue. What it is, the revenue is equal to the units of sales times sales price. रेवेन्यू का फॉर्मूला जिससे हम रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कंपनीज कैलकुलेट करती हैं, बिजनेसेस कैलकुलेट करते हैं कि अब तक हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 3 months, आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year, जो भी उनका अकाउंटिंग पीरियड है, देन दे यूज़ टू कैलकुलेट. तो वो कैलकुलेट होता है यूनिट्स ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स प्राइस के साथ. यूनिट ऑफ सेल्स मीन्स हाउ मैनी आइटम्स, हाउ मैनी गुड्स दे हैव सोल्ड सो फार. अब तक कितनी आइटम सेल्स हो चुकी हैं,
मल्टीप्लाई बाय सेल्स प्राइस। एक आइटम की सेल प्राइस क्या है, एक यूनिट की सेल प्राइस क्या है। लेट्स सपोज इफ आई एम सेलिंग द मार्कर्स, आई हैव सोल्ड सो फार 20 मार्कर्स। अगर मैंने 20 मार्कर्स अपने बिजनेस में सेल कर लिए हैं और एक मार्कर की प्राइस, सेल प्राइस ऑफ यूनिट, एक मार्कर की सेल प्राइस लेट्स सपोज 50 रुपीज़ है, राइट। तो हाउ आई विल गेट द टोटल रेवेन्यू? What I have to do actually, I will take the units of sales that were 20 मैंने सेल किए थे और सेल प्राइस थी और सेल प्राइस थी 50 रुपीज़ फॉर ईच मार्कर। हाउ आई विल गेट the total of revenue? What I will do, I will multiply the unit of sales with the sale price, means 20 times 50, and I will get my total revenue. So what it is actually equals to 1000. If you will multiply 50 by 20, you will get the answer, that is 1000. So 1000 will be the revenue of the business so far. आई होप इट्स ईजी एंड क्लियर। जब भी रेवेन्यू कैलकुलेट करना होता है तो जितनी आइटम सेल हो चुकी होती हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाता है एक आइटम की प्राइस के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद रेवेन्यू का अमाउंट आपको पता चल जाता है, कितना रेवेन्यू अब तक जनरेट हो चुका हुआ है। तो इट डिपेंड्स कि ये कितने पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है, वीकली, मंथली, या जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है, अकॉर्डिंग टू दैट उसको मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू कैलकुलेट किया जा सकता है और कंपनीज ऐसे ही करती हैं, राइट। नाउ द लास्ट एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इज कैपिटल। कैपिटल को समझना बहुत आसान है इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दैट कैपिटल इज़ बेसिकली इन्वेस्टमेंट। कैपिटल की टर्म बेसिकली अकाउंटिंग में यूज़ होती है, बट इन जनरल जो टर्म यूज़ की जाती है बिजनेस में, जैसे हम आम जुबान में यूज़ करते हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड what is capital or investment. Capital is the money and assets invested by an owner or owners to start, run, or grow a business. Yes, actually, capital can be in the form of money and assets, right? The owner can invest in the business through cash or through the different assets. It can be invested by one owner or the group of owners. Depends what kind of business it is. Further, you will study about that. Business अकेला बंदा भी कर सकता है, sole proprietorship, या फिर group of owners भी कर सकते हैं, like in partnership. So depends कि owners कितने हैं, एक है या ज़्यादा हैं, वो जो भी अपना पर्सनल यूज़ की चीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे उसको कहते हैं कैपिटल। पर्सनल, जिसमें कैश भी आता है और जिसमें उनकी डिफरेंट एसेट्स भी आते हैं। कैपिटल इन्वेस्ट क्यों किया जाता है? ऑफ कोर्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और टू रन द एग्जिस्टिंग बिजनेस और टू ग्रो द बिजनेस दैट इज ऑलरेडी running, right? Forms of investments. These investments that can be done by the owner. These can be done in different forms. The investments can be in different forms. The first one is cash or bank.
This is the investment in the form of money if the owner is investing cash in the business. Let's start a new business, for example, for stationery. Of course, business start करने के लिए कैश चाहिए, राइट? उसके लिए लाइक परचेज करना है, आपने प्रोडक्ट को परचेज करना है, मुझे मार्केट जाना है, मैं स्टेशनरी परचेज करूँगी, तो ऑफ कोर्स उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। या मुझे कुछ ऐसी मशीनरी लगानी है कि मैं अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकूँ, उसको बना सकूँ, तो उस मशीनरी को लगाने के लिए भी मुझे पैसा चाहिए, राइट? अब वो पैसा कहाँ से आएगा? वो ओनर इन्वेस्ट करेगा, वो ओनर का अपना पैसा है। जब वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है तो फिर वो कहलाता है कैपिटल, हिज इन्वेस्टमेंट। तो जब भी पैसा कैश की सूरत में या बैंक चेक की सूरत में बैंक से निकाला जाए, वो भी तो मनी है ना, तो इन दैट काइंड इट इज़ द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश और बैंक। Next, we have non-current assets. Owner can invest in his business through non-current assets also. Let's see how. This is the investment of assets like furniture, car, goods, etc. from personal cash of the owner. Now, this is the second form of the investment. Let's see, business is running. Okay, but now there is a requirement of some kind of plants, I mean machinery in the business, and the owner is investing in the business by providing that machinery or by providing that asset from his own cash, from his personal use. Of course, that will be the investment in the form of non-current asset. Let's make it simple. Business is running and there is a requirement of a car. There is a requirement of a transport. And the owner is investing in the business by giving his own car or by providing the car through his own cash, not from the capital that is already invested in the business. Then this kind of investment will be non-current asset investment. बिजनेस में नीड आई है कार की, किसी ट्रांसपोर्ट की, बट जो ऑलरेडी कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में, उससे उस कार को परचेज नहीं किया जा रहा, बट जो ओनर है वो उसे अपने पैसे से कार परचेज करके दे रहा है, या वो अपने पर्सनल यूज़ की कार को बिजनेस में उसने इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस में डाल दिया। अब उसके पर्सनल यूज़ की नहीं रही, अब वो बिजनेस की प्रॉपर्टी हो गई। सो अब वो बन गया कैपिटल। विच टाइप ऑफ कैपिटल? दैट इज एक्चुअली नॉन करेंट एसेट कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ नॉन करेंट एसेट, क्योंकि वो कैश नहीं है। कार हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट्स हो गए, डिफरेंट मशीनरीज हो गई, that all are basically the non-current assets, as we have done in assets, right? So this is also the form of investment. Let's see, बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके लिए लैंड चाहिए, उसके लिए बिल्डिंग चाहिए जहाँ पे बिजनेस को रन किया जाएगा, ऑफिस बनाया जाएगा, मशीनरीज लगाई जाएंगी, सारा सिस्टम रन होगा। तो ऑफ कोर्स दैट बिल्डिंग और लैंड वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। ओनर प्रोवाइड कर रहा है एक बिल्डिंग, या और ओनर अपने पर्सनल यूज़ का जो पैसा है, जो कैश है, वहाँ से वो बिल्डिंग को परचेज करके देता है। तो ऑफ कोर्स दैट इज़ एन अदर इन्वेस्टमेंट, राइट? अगर वो बिल्डिंग उसी पैसे से परचेज की जाती है जो ऑलरेडी कैपिटल में इन्वेस्ट हुआ हुआ है, देन उसको सेपरेट काउंट नहीं किया जाएगा। बट इफ़ द ओनर इज़ प्रोवाइडिंग द बिल्डिंग बिसाइड्स द कैपिटल, कैपिटल के अलावा वो एक बिल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस में, या अपने कैश के साथ बिल्डिंग परचेज करके दे रहा है, या रेंटल दे रहा है, वट ओनर प्रोवाइड कर रहा है, राइट? देन it will be non-current asset investment from the owner.
I hope it's clear. The third investment form is inventory that we have done before. Let's revise it. These are the goods invested from the personal cash of the owner and remained unsold. So, as we have done before, to run a business, the owner is purchasing the goods, right? Or the product or the item which he has to resell to earn money, to earn the income, to generate the revenue, right? If those goods are invested in the business by the owner from his personal cash and that remained unsold after accounting period, then this is the inventory that is invested by the owner. In simple words, गुड्स परचेज की जा रही हैं ओनर से. ओनर वहाँ से कैश नहीं ले रहा जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में. वो अपने पर्सनल यूज़ का कैश उठाता है, उससे गुड्स को परचेज करके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है उन गुड्स को, उन आइटम्स को, उन प्रोडक्ट्स को. चाहे वो अपने घर से उठा के लाया है सेल करने के लिए या वो अपने पर्सनल कैश से उसे परचेज करके लेकर आया है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके पास कोई फर्नीचर पड़ा हुआ था, वो अपना फर्नीचर ले आया कि ये भी मैं बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको भी सेल करो. फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके पास कुछ स्टेशनरी पड़ी हुई थी, वो लेकर आ गया कि इसको भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये भी सेल होगा, राइट? तो दैट इज़ हिज ओन न्यू इन्वेस्टमेंट. ये पहले वाला कैपिटल नहीं है, इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट, राइट? अब वो इन्वेस्टमेंट तो उसने कर दी, बट आफ्टर सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड अगर वो सेल नहीं हुआ, इट रिमेन्ड अनसोल्ड, और वो न्यू अकाउंटिंग पीरियड में एंटर हो गया, देन इट इज़ द इन्वेंट्री and this inventory was invested by the owner, so it is another form of investment. So to summarize, there are three forms of investment that can be done by the owner. The first is cash or bank, second, the non current assets, and third, in the form of inventory, right? So, I hope all of the forms of investments are clear, and this is basically the capital that is invested by the business, and this was the last form of the last element of accounting. So far we have done the 5 elements of accounting. Here you have to understand the term drawing. It is related to capital also, right? What is drawing basically? It represents the amount in terms of cash or assets withdrawn by an owner from the business for personal use. Drawings can be in the form of cash bank, non-current assets or inventory. Drawings reduce the business capital. Drawings are contra capitals. Let's understand one by one. सबसे पहले हमने पढ़ा कि it in terms of cash or asset withdrawn by the owner from the business for personal use. What is this? Let's see. If the owner is investing something in the business, either cash or any asset, right? That is the capital invested by the owner. That is the investment, right? Now, on the other hand, if the owner is taking something from the business, like it can be the cash, it can be the current asset, non-current asset, or inventory, then it is the drawing of the owner, right? Basically, it is contra capital, means it is the opposite of the capital, right? इन्वेस्टमेंट कर दी बिजनेस में, ओनर ने कैश इन्वेस्ट कर दिया, कुछ नॉन करेंट एसेट्स इन्वेस्ट कर दिए या इन्वेंट्री इन्वेस्ट कर दी.
ओनर को ज़रूरत पड़ी है कुछ पैसों की, उसने अपने पर्सनल यूज़ के अलावा उसने बिजनेस में से कुछ कैश उठा लिया। फॉर एग्जांपल उसने $50,000 इन्वेस्ट किए थे। नाउ ही इज़ विदड्रॉइंग। विदड्रॉइंग मीन्स उसने पैसा वापस निकाल लिया। फॉर एग्जांपल उसको ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी, उसने $10,000 उसने विदड्रॉ कर लिए। विदड्रॉ कर लिए मीन्स उसने बिजनेस में से निकाल लिए। सो दैट विदड्रॉ इज़ एक्चुअली द ड्रॉइंग। ओनर जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, दैट इज़ कैपिटल। और ओनर जो बिजनेस से निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ये नहीं कि उसने बिजनेस में कुछ परचेज करने के लिए निकाला है तो वो ड्राइंग नहीं होगी। लेकिन उसने अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ निकाल ली है, फॉर एग्जांपल उसने बिजनेस की कार यूज़ कर ली, आई मीन ले ली, उसने बिजनेस का लैंड वापस ले लिया या बिल्डिंग उसने वापस ले ली। फॉर एग्जांपल उसने इन्वेंट्री में से कुछ चीज़ें उठा के वो घर ले गया। फॉर एग्जांपल उसने कैश निकाल लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। So that is basically the drawing that is done by the owner. And of course it is the contra capital, means ये टर्म ड्राइंग ऑपोजिट होता है कैपिटल के। अब चूंकि वो ऑपोजिट है कैपिटल का, दैट्स वाई इट रिड्यूस द बिजनेस कैपिटल। ओके, विद ड्राइंग the capital will be reduces. Of course जो भी कैपिटल था, इन्वेस्टमेंट था, उसमें से जब ओनर विड्रॉ करेगा, कुछ निकालेगा, कुछ उठा के लेकर जाएगा, तो कैपिटल कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स, दैट ड्राइंग is basically the contra capital, means it is the opposite of capital and it reduces the business capital, and it is always done by the owner. ओनर जिसने इन्वेस्ट किया कैपिटल वही ड्राइंग करेगा, राइट, एंड इट इज़ द ऑपोजिट। होप ऑल ऑफ द एलिमेंट्स of accounting are clear one by one: assets, liabilities, expenses, revenues, and drawings. My next video will be about the short summary, or you can say the short definition with examples of the elements of accounting, and then we will move to the next topic of fundamental accounting or basic accounting, that is part of your O levels, A levels, your commerce graduation, even of your ACCA foundation. So all of you can get benefited through these videos. Do watch them. Note down all the definitions that are very important to memorize, to remember, and to use in your exams and tests, right? Okay, then take very good care of yourself. Thanks for watching my videos. Do like them, share them, and take good care of yourself. Allah Hafiz.